वेल फ्रेंड्स, अभी हम रूल नंबर 4 से आगे डील करेंगे. नाउ विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, वी आर डिस्कसिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब रिलेशनशिप हियर. और यहाँ रूल नंबर 4 को डिस्कस करते हुए सबसे पहले जो चीज मेरे दिमाग में आती है, लास्ट सेशन में हमने बात की थी, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड दे आर नॉर्मली टेकन एज प्लूरल, राइट. बट मैंने बताया था कि हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने सब्जेक्ट हैं, हमें मतलब इससे है कि वो ज्वाइन किससे हुए. जैसे एंड से किया था तो नॉर्मल केस में हम उसे प्लूरल लेते थे. बट व्हाट इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, विद, together with, along with, besides, in addition to, as well as, or including. So if two subjects are joined by any of these words, the verb will follow the first subject. For example, we can say that the television along with the cabinet is to be sold, or my parents along with my friend has come. Here, in this example, we have to look if there are two subjects, right? But they are joined by, with, together with, along with, besides, in addition to, as well as, or including. In that case, the verb will follow the first subject. If the first subject of the two subjects given in the sentence, if the first subject is singular, the verb will be singular. And if the first subject is plural, the verb will be plural. Right? Any doubt? So, if the rule, we can confine it, we can sum it like, if two subjects are joined by, with, together with, along with, besides, in addition to, as well as including, the verb will follow the first subject or the subject that comes first. Okay, friends, let's come to the next rule. Rule number 5 and 6, we can sum it together. If two subjects are not joined by and, or not joined by any of these last words like with, together with, along with, besides, in addition to, as well as including. Now they are joined by either or, neither nor, not only but also, or nor. In that case, the verb will follow the subject that comes later. For example, if there are two subjects joined by or, nor, either or, neither nor, not only but also, the verb will follow the second subject or the subject that comes, that is closer to the verb. In that case, verb अपने पास वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा. अगर पास वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और पास वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स. अब इन दैट केस बोथ द सब्जेक्ट आर प्लूरल, इन दैट केस नॉर्मली द वर्ब विल बी प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल नीदर माय फादर नॉर माय फ्रेंड्स. इन दैट केस द वर्ब विल फॉलो द लेटर वन, जो सब्जेक्ट है, दैट मींस माय फ्रेंड्स, क्योंकि वो प्लूरल है और हमें जो वर्ब लगाना है वो भी प्लूरल लगाना है. राइट? इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दैट?